The first one is your 8085 microprocessor, 8086 microprocessor, okay, and another one is 8051 microcontroller. Okay, we have covered almost this microprocessor. Only the one topic is interrupt is remained. So what I planned that इन तीनों का मतलब 8085, 8086, 8051 इन तीनों का इंटरप्ट मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। 8086 I have uploaded a few video lectures. Please watch this video lectures और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ और वीडियो लेक्चर्स अभी और अपलोड करूंगा 8086 के, मोस्ट पॉसिबली आज और करूंगा, तो आपको वहीं से ही देखना है इसको। और 8051 मैडम ने भी कवर किया है, मैंने भी कुछ कंटेंट्स कवर किए हैं, तो ये तीनों ही पोर्शन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, भले ही आपके मिड टर्म टेस्ट हो या आपका बेसिकली कोई फाइनल एग्जाम हो, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और लैब में भी बेसिकली ऑलमोस्ट वी हैव डन द प्रैक्टिकल्स फॉर दैट वन, and our practicals are running for 8051 and 8086. I will tell you the one simulator is available, but before going to that simulator you should be aware about the instruction that is available for the 8086 microprocessor. Okay, so we are starting a new topic today regarding the 8051. So 8051 microcontroller is very powerful microcontroller. B group आवाज आ रही है ना मेरी? B group sir. Okay. Regarding the assignments, third year, only the 2 students have submitted the assignment. And I will not take care about the remaining students now because they have not submitted the assignment for the second assignment. Okay. So we will talk about the timer section of 8085, 8051 microcontroller. Okay. So this timer section, before going to this timer section, I want to give the one example for that one. Is that, for example, you are having one bike. Suppose this type bike you are having, and this is the handle of that bike. Okay, so this is the one example of that bike. What are the things that are necessary to run this bike? Anybody can unmute your mic and then tell that, सर इसको चलाने के लिए मान लो एक बाइक है आपके पास में, हीरो होंडा हो या जो भी हो आपके पास में, एक्टिवा हो या, फर्स्ट थिंग इज फ्यूल, करेक्ट? ओके, देन सर इंजन, ओके फाइन, ओके ठीक है। मतलब इस बाइक का आर्किटेक्चर अपन बाद में बात करेंगे कि इसके, जैसे अभी इंजन आपने कहा तो वो तो इसका आर्किटेक्चर हो गया, इंटरनल आर्किटेक्चर। इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये चलने लग जाए ऐसे, पाथ, तो वो तो एक इसको रन करना है ना बाइक को, सेट, ignition. Am I right? So these are the two important things, is that the first you are having the fuel and the second one is that you should having the proper ignition to start the engine. Okay, so in the form of ignition you are having the key. Okay, जब आप की लगाते हैं आपके एक्टिवा या जुपिटर में या आपके हीरो होंडा में, तब उसका बैटरी ऑन होता है और बैटरी ऑन होके वो एक इग्निशन प्रोवाइड करता है और जो करस्पॉन्डिंग फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट करता है एंड that energy will be converted into the kinetic energy. Okay. Apart from that, you should be having the proper skill to drive this bike, and you are having the proper license from the authorities to validate that I can run that bike. Okay. So keep this example in your mind. अभी कुछ चीजें मैं आपको relate करूंगा हमारे timer section से, है ना? Now 8051 is having the one timer. Okay, so पहले अपन बात करते हैं टाइमर। नॉर्मल लाइफ में हम टाइमर क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको दौड़ना है तो आपने क्या करा, मेरे को 10 मिनट अगर दौड़ना है तो आप इस टाइमर को सेट करते हैं, ठीक है। अब आपने सेट कर दिया, कुछ में टाइमर या तो ये अप काउंटर होगा, तो या तो अप डायरेक्शन में जाएगा या फिर ये डाउन डायरेक्शन में जाएगा।
वो डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन द स्टॉप वॉच, we can take the example of the stopwatch. So stopwatch is one example of the down timer, and we can say कि जब हम टाइमर लगाते हैं हमारे मोबाइल में तो वो एक तरह का अप टाइमर है कि 10 मिनट होने के बाद वो आपको बजर देगा और उसके बाद. So the thing is that if I'm talking about the up and down type of the counter or the timer, then in this case we are having the one final count. That final value is normally called as the terminal count. Okay, so now for example, if I'm saying I have started my timer from this and I set my terminal count value as a A07F. So when this it will reach to A07, immediately one buzzer will be on, or we can say the alarm should be on, and it will show that कि आपने जो फाइनल टर्मिनल काउंट जो सेट किया था वो टर्मिनल काउंट यहाँ पर रीच हो गया है. तो इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करेगा कि आपके हो सकता है कि आपने 10 मिनट का टाइमर लगाया और फिर वो जो है वो आपका टाइमर जो है वो चालू हो गया, और फाइनल काउंट पर रखने के बाद में आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा कि आपका बर्जर जो है वो आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको रन करने के लिए व्हाट इज द नेसेसरी थिंग. ओके, then it's required that you should load some contents. You should load some contents. Okay, अब contents की बात करें तो content मतलब मेरा count value. कोई डाउट इसमें किसी को अभी तक जो मैंने किया? Any doubt? No, sir. Okay, this is very simple. Okay. Now come to the point that if I talk about the timer, if somebody is asking you that, but give me the definition of the timer. So timer is called as a one type of the hardware counter. Okay, something if you are making inside the architecture of your microprocessor and microcontroller, and it is just like it's some type of the counter activity. So this counter can be called as a timer. Okay, so actually this hardware counter will actually count at some predefined or predetermined interval. I given the one example for that one is that. Okay, so for example, if I'm saying that my counter is 16-bit counter or 16-bit timer, so it's you have to load the value. You have to load the value as a 16-bit. Okay, so means 16-bit count you have to load. Okay, so actually sometime it will depend upon. अभी जैसे मैंने कहा कि actually ये सब depend करता है कि आपकी टाइमर की साइज क्या है. जैसे मैंने कहा कि 16-bit, तो ये depend करता है कि आपकी टाइमर की साइज. So in the case of this one, I will give the one example for that one is that if I am giving 16-bit counter example or timer example. So if I am saying that my first value so it is in binary, it is a 16-bit timer or counter. It is started to run. Okay, so the next value after the some predetermined time, it will be increment by 1 and it will go like this one, and finally because it is a 16-bit one, so it will go up to the maximum of 111 1111 1111. So it is in a binary. So we can say that this count timer is started from in a hexadecimal number system and it has reached to FFFF. Okay, then after this what will happen, that this because it is 16-bit, if I am saying what will happen after this condition, if somebody will ask that what will happen after this, okay, क्या होगा इसके बाद. तो अगर ये इस वैल्यू पे अगर रीच कर गया है तो हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज 16-bit, अगेन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0000 0000 0000 and 0000.
It is again reloaded with the some predetermined value, but this value is called as a terminal one, we can say. So we should be having some indication that this value is reached. Okay, so in the architecture of 8051 microcontroller, they have designed the various type of the timer. The value of the timer is either 8-bit or 13-bit or 16-bit. When this final value will reach, they have given the provision that either some flag will be set to give the information that the final value is reached. Final value is reached. Again, the counter will run. Counter will now never stop. Then you can take the decision. So they have designed the same flag. Okay. So after to show the final value, maximum value, user should be informed. Okay, so how he or she will be informed? So it will be informed with the help of the some flags. So the answer says that yes, there should be some flags inside that. Okay, so that flag is normally called as a one type of the overflow flag. Because what will happen that if you are incrementing this 1111, so obviously अगर मेरी कैपेसिटी अगर इसकी 16 बिट की है, अगर मान लो एक पानी की टंकी है मेरे पास में, पानी की टंकी है और ये पानी की टंकी में पानी भरना मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते मेरा पानी यहाँ तक चला गया ऊपर तक, तो ऑब्वियसली इसको अपन ओवरफ्लो बोलेंगे, पानी फिर नीचे धुलने लगेगा. ओके, सो इन दिस केस ऑफ दिस वन इसकी कैपेसिटी से 16 बिट की है. अगर मैं इसको एक से इंक्रीमेंट करूंगा तो ये एक यहाँ पर और यहाँ पर एक कैरी फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरा ओवरफ्लो आ रहा है क्योंकि मैं कैपेसिटी से एग्जिट कर चुका हूँ. सो दिस इज कॉल्ड एज ए ओवरफ्लो. So there is a one type of overflow flag is available for timer. Okay, is it clear? Is it clear? Okay. So now we can come to the point on here is that, you know, whenever we are talking about the any type of the flag inside to this one, so where these flags are available. So you know that in the case of 8051 microcontroller, inside the design, they have provided some special function registers. In the short form, they are called as a SFR. So this special function for register, if I am talking about in the sense of the timer, so what are the special function register that can be used for the timer section? Can anybody can tell me that what type of the special function register, as the madam is discussed? The first one is called as a T mode, which is called as a timer mode. This T-con is called as a timer control. Another one is called as a TH0, which is called timer higher order byte, and TL0. अब अपन इसको one by one देखते हैं कि ये क्या है. Okay. Now, if I talking about the 8051 timer, there are two types of the timers are actually available into this one. Okay, the first one is called as a timer 0. Another one is called as timer 1. Okay, both having the capacity of 16 bit. Okay. Okay, so if I draw one of the timer, so they are normally called as a T0, another one is called as a T1. Like this, the timer is designated with their name. If I'm saying about T0, so T0 stands for the timer 0, and if I'm talking about the timer 1, it is called as a T1. तो उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है. अब नाम दिए हैं तो अपन एक एक करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 16 बिट है, तो 16 बिट है तो you know that the capacity of this one is that it has a data bus of only 8 bits. So obviously you should be having the some provision for that one. Okay, so first we will think about that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So this start with the D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, and D7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So this is called as just like this one. This is called D8 to D15. So actually what will happen that
if I'm saying that from here to here, if suppose I have the one count, or we can say I have the one value, and I'm calling this value as AC9A. Okay, so if I'm saying AC9A, this is in my hexadecimal count value, and I want to load this count value inside this timer. So the thing is that you have to load 9A into the, this is called the lower order byte, and this is called the higher order byte. So similarly, just like even we can say that inside the architecture there are one 16-bit timer completely, but these 16-bit timers are actually designed into the two different parts. And for example, if I'm saying this will be corresponding to the timer, if I'm writing T, so T will be stands for the timer, and the if I want to differentiate between the higher order byte and the lower order byte, I will say this is called the TL. So if I'm writing TL, so this will stand for the timer lower order byte. And if this is corresponding to the timer 0, I will write down it just like a TL0. So this is called the TL0. I am putting this one. So this is differentiate, that it will called as a 0. Similarly, if I want to load this higher order content into this one, this is called TH, and this is for counter timer 0. So this is called the higher order byte. Okay, so like this one, अगर आपको कौन सा count यहाँ पे load करना है, for example this is 9, so you can load the values into this one just like this. So if I want to say this is 9, so 9 is corresponding to 1001, and this is A. So if I load this one 1010, and this is 1010, and this is 1011, I think so that this is C. Check it. ये C क्या होगा? So like this one, मैंने ये पूरा का पूरा count value यहाँ पे कर दिया. तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा conclude ये करते हैं. हमारे पास में दो अलग अलग टाइमर है, टाइमर 0 है, टाइमर 1 है. तो एक्चुअली क्या है, इसकी साइज अगर इंडिविजुअल अगर टाइमर 0 की बात करें, तो टाइमर 0 की साइज 16 बिट है. अब 16 बिट वैल्यू जो है वो कैसे क्या अपन लोड करें, क्योंकि मेरे पास डाटा बस की कैपेसिटी 8 बिट की है. तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले टाइमर को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा. पहला वाला पार्ट जो है मेरा किसके लिए होगा, इसके लोअर ऑर्डर बाइट को मेरे को लोड करना है, अगले वाले को मेरे को हायर ऑर्डर बाइट लोड करना है. तो ऑब्वियसली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके फिर मैं इसमें काउंट की वैल्यू लोड करूंगा. क्योंकि जब मैंने कहा था कि जब आपको कोई भी टाइमर आप इनिशियलाइज करते हैं, तो सबसे पहली वाली चीज होती है कि आप उसमें कोई ना कोई काउंट की वैल्यू आप लोड करें. तो काउंट की वैल्यू जो मैंने लोड करी वो क्या कैसे लोड करेंगे, मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइमर 0 का अगर मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मेरे को TL0 की वैल्यू पहले लोड करनी पड़ेगी, उसके बाद TH0 की वैल्यू वो लोड करनी पड़ेगी. तो मैं इसको कहूंगा एक तरह का 16 बिट टाइमर. ओके, सिमिलरली अगर मैं टाइमर 1 की बात करूं, टाइमर 1 अगर मैं पूरे 16 बिट को अगर यहाँ पे ट्राई करूं, एक बार चेक करना दीजिए. D0, D1, D2, D3, 4, 5, 6 and 7. So this, can anybody tell me that इसका नाम क्या होगा? What is the name for this one? TL1. This is called timer, lower order timer for the timer 1, and remaining one is called as, I'm writing for this, D8, D9, D10, D11, 12, 13, 14, and the last one is called 15. So this is my D15. Okay, so this is called, according to the nomenclature, this is called as a TH1. Okay, so now we can see that if I'm talking about the timer 0 again, once again, so timer 0, if I want to load the value into the count, okay, so this is called TL0. Another one
is called TH0. Similarly, we can say timer 1. So timer 1 is just like TH1, and this is called as a TH0. Am I right till now? Okay. So this 2 parts is clear. So this is actually inside the architecture of 8051 microcontroller. Any question till now? Any question? Any question till now? BA group? No, sir. पूछ सकते हैं ना अपन क्वेश्चन बीच में. ओके, थोड़ा आगे बढ़े. अब बेसिकली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बाइक का एग्जांपल दिया था. तो उस बाइक के एग्जांपल में कोई बताएगा कि सर कौन सी चीज कहाँ पे फिट हो रही है? अभी तक जो मैंने बताया था तो उसमें कौन सी चीज कहाँ पे फिट हो रही है? माइक अनम्यूट करो ब्रदर, सब लोग जरा मेरे को बताओ कौन सी चीज कहाँ फिट हो रही है? कोई आइडिया नहीं किसी को भी? जैसे मैंने अभी काउंट बताया, तो काउंट कहाँ, कौन सी चीज को फिट कर रहा है वो? जो काउंट मैंने बताया था वो कहाँ, कौन सी चीज को मीट कर रहा है इन सब में से? इग्निशन. इग्निशन. जो काउंट है वो एक तरह का फ्यूल है. मतलब पहले आपने इसको लोड किया उसके बाद ही टाइमर चलेगा. तो एक तरह का इग्निशन ना होते हुए वो होगा फ्यूल हो गया, है ना. अब अपन अगली बात करते हैं कि जो मैंने एसएफआर आपको डिस्कस किए. एसएफआर, ओके. अब एसएफआर में जो अपन ने देखा था कि हमारे पास में टाइमर है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास में 2 एसएफआर है. पहला होता है टी मोड. टी मोड स्टैंड्स फॉर टाइमर मोड. ओके, as the madam is discussed with you. So obviously I can set some modes inside to this one. So whenever I want to set a modes for the timer, I can set it for the different purpose. And apart from that, there is a few functionality inside to this one. I will talk the timer modes also. And the another one is that another name is given to another SFR. So this is my first one, and this is my second one. So this is called as a timer control. So this timer control will obviously control the timer. Okay, so there are some bits inside to this one. If you want to start or stop the timer, you can do it. So this is the one of the function. I will tell you the few functions later on. So the first very important thing is that now we'll talk about the timer mode. So the T mode is just like this. It's a 8-bit. Okay, so I am writing the size of this in the bracket. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. So actually, what they have done, they have again divided this T mode into the two different parts. Why? Because there are 2 timers. So if I'm saying this 4-bit 1, 2, 3, 4-bit, this 4-bit is corresponding to one timer, and another 4-bit is corresponding to the another timer. So like this one. So if I say about that one, so this is my timer 0. This is my timer 0, and this is for my timer 1. ओके, मतलब मैंने क्या किया, मेरे को टाइमर के मोड सेट करने हैं. मोड सेट करने के लिए मेरे पास में देखा कि मेरे पास एक कंट्रोल वर्ड है, और या उसको अपन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बोले. अब उन्होंने प्रॉब्लम ऐसी दे दी कि आपको, हमने साइज तो 8 बिट की बना दी, आपको इससे 2 टाइमर को कंट्रोल करना है. तो 2 टाइमर को कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली मेरे को 4-4 बिट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. तो मैंने 4-4 बिट उसमें डिवाइड कर ली. तो पहली वाली जो बिट रहती है, अगर मैं यहाँ पर M0 और M1 लिखूं, तो मतलब मैं टाइमर 0 की बात कर रहा हूँ. तो दिस M0 and M1 will define the modes of the timer. Another one is called C/T bar. Okay. Another one is called as a GAT. GAT. Okay. So this M0 and M1 will try to set the modes for the timer 0. Obviously there are 2 bits,
So these 2 bits will generate the 4 combinations. So this 4 combination will be valid for the 4 different modes for that one. Okay. So similarly, like that, if I say this is my M0, M1, this is my C oblique T bar, and this is my get. Okay. So this is that for the timer mode 1. Okay. So now come to the point on here is that हम पहले देखते हैं ये दोनों बिट आपकी मोड के लिए हो गई. So M0 and M1 will decide the modes of this one. M0 and M1 means the modes. Okay. C oblique T bar, as you say, there are 2 different combinations are available on a single bit. So if I'm saying that when this bit is 1, so this bit is corresponding, means this value is corresponding to the counter, and when this C oblique T bar is 0, then it is called as a timer. So you can differentiate between the timer and counter by using this bit. If we set this bit, because the user can set this bit, so this T mode is very important. So if we're putting the value of C oblique T bar as a 1, then it will act like a counter. The whole architecture that is provided for the timer will act like a counter, while in the case of this one, C oblique T bar will be run for, if it is 0, it will be called as a timer 0. Okay. So now come to the point. This is called the gate. So your timer can be controlled by 2 different type of activities. The first one is called, you can control either by the software or you can control it by the hardware. Okay. So now come to the point here is that अब हार्डवेयर की जब बात आ गई तो मतलब एक तरह का गेट, मतलब आप इसको कोई ना कोई पल्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो. तो पल्स अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो मतलब हार्डवेयर में, मतलब दिस थिंग इज रिलेटेड विद हार्डवेयर. ओके. सो की पॉइंट इज दैट आपको टाइमर को अगर कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल करना है मतलब इसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है या कोई और भी चीज करना है, तो उसके 2 अलग अलग तरीके हैं. या तो मैं इसको हार्डवेयर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ या मैं सॉफ्टवेयर तरीके से. सॉफ्टवेयर की जब बात आती है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. पहले अपन मोड्स की बात करते हैं. So this is clear. This T mode is clear to all of you. What they have done, उन्होंने क्या किया, T mode मतलब क्या, सबसे पहले नाम देखते ही पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं टाइमर का मोड सेट करना है. मोड सेट करने के लिए उन्होंने आपकी 2 बिट बनाई M0 और M1. तो ये 2 बिट क्या करेगी, 2 बिट जो है आपको अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ M0 और M1, तो मान लीजिए मेरी 2 to the power 2 बिट्स है, तो ये मेरे 4 कॉम्बिनेशन जनरेट करेगी. तो दिस इज 00, 01, 10 एंड 11. ओके. ऑब्वियसली क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन है. अब ये अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ओनली फॉर टाइमर 0, दिस इज फॉर माय टाइमर 0. So what will happen in this case? What will happen if I am saying this is my timer 0? So this is called the mode 0. Okay. So this mode 0, in this case, your count value will be different. So this count value is called as a 13-bit timer. Okay. Means the value of count will be 13-bit, not the 16-bit. In the case of this mode 1, we can say it is a 16-bit time. Okay. Means the whole value will be used for this one. In the case of this is called the mode 2. So it is called as a 8-bit timer with the auto reload function. Okay. The next bit is called as a split timer. So again come to this. Okay. इसको अपन थोड़ा समझते हैं. 13 bit, 16 bit, 8 bit क्या होती है, split timers क्या होते हैं. So now come to the point. If I am saying that 13-bit timer, 13-bit timer. So if I am saying I have my count value as a 13-bit timer, so this is my count value. So count value is 13-bit. So obviously this 13-bit 2 to the power 13 can generate in the decimal system.
It will start from 0 to 8192. Okay, so now what will happen? Now I will tell you that in the case of this one, if I'm talking about the timer 0, this timer 0, you know that you have to load the count. So you will load the count into two different registers. So for timer 0, we are having the TL0, we are having the TH0. Am I right for that? Am I right? So it will be depend upon the user कि वो अब क्या करेगा, मतलब इसमें क्या है. तो मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं अपन 8 + 5, 8 + 5 इज इक्वल टू 30. मतलब काउंट की वैल्यू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. तो या तो मैं पूरा का पूरा 8 यहाँ पे लोड कर दूं, मतलब 8 बिट यहाँ लोड कर दूं, है ना, 5 बिट में यहाँ लोड कर दूं, तो ये हो गया, मैंने कहा कि मेरा 13 बिट हो गया. तो डिपेंड करता है, मैं इसका रिवर्स भी कर सकता हूँ. 5 बिट जो है वो TH0 में लोड कर दिया, 8 बिट मैंने TH0 में लोड कर दिया, और बाकी के 3 बिट को मैं अलग किसी फंक्शन में ले रहा हूँ. तो ये मेरी काउंट की वैल्यू हो गई. तो मैंने काउंट की वैल्यू कैसे रखना है वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका मोड बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 16 बिट टाइमर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट वन एज a 16 bit timer. This 16-bit timer is corresponding to your mode 1. In the case, for example, if we are having the timer 0, you can just break it into the two different parts. So obviously, in case of this one, the TL0 will be having the value of 8 bits, and this TH0 will be having the value of 8 bits. Clear? तो ये 16 बिट हो गया, है ना. अब अपन ने किया है 8155 में भी प्रोग्रामिंग करके देखी है कि वहां पे जो काउंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि 8155 में अगर आपको मैंने कहा था कि वहां पे टाइमर की साइज क्या होती थी, तो एडमिट करके बताओ टाइमर कितने बिट का होता था, काउंट कितने बिट का होता था, काउंट कितने बिट का होता है वहां पर 8155 में? सर 14. यस करेक्ट, 14 बिट जो है वो मेरा काउंट होता था, और 2 बिट मेरे मोड के लिए सेट मोड कंट्रोल. या. सो दिस इज कॉल्ड द जस्ट लाइक दिस वन, जैसे वहां हो रहा था ना वैसा के वैसा यही है. लेकिन अगर मान लो मेरे पास 16 बिट टाइमर है, तो ऑब्वियसली मेरा टाइमर ये जो है वो दो अलग अलग वैल्यू क्रॉस करेंगे. तो ये वैल्यू जो है ऑब्वियसली इसकी साइज जो है 8 बिट की है, इसकी साइज भी 8 बिट की है. तो मैंने इसको फुल कैपेसिटी में इसको लोड कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको 16 बिट टाइमर. सो मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरा THX है और ये मेरा TLX है, मतलब X की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. मतलब दो अलग अलग टाइमर है ना मेरा, क्योंकि मेरे दो टाइमर 0 है और टाइमर 1 भी है. तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो कैस्केडेड है यहाँ पर, है ना, कैस्केडेड है, मतलब साथ में जुड़े हुए. मतलब ये क्या करेंगे, जैसे मान लो अब कैस्केडेड का कोई मतलब समझो, इसका ये भी हो सकता है कि जब ये काउंटर जब रन करना स्टार्ट करेगा, मान लो जैसे ये शुरू में सब कुछ 0 0 0 है, मतलब एक में इसको ऐसा बनाऊं, ये 0 0 0 है, और ये जो है मेरा 0 0 0 1 है. एक नेक्स्ट स्टेप पे ये मान लो ऐसा हो गया 1 1 1 1, है ना. तो अब ये फिर एक से इंक्रीमेंट करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा, तो मान लो ये सब वैल्यू मेरी 0 0 0 है. तो ये कैस्केडिंग में इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि ये इसको 1 कर देगा और ये बाकी सबको 0 0, लाइक इट विल बी गो लाइक इन दिस वे. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए कैस्केडेड. मतलब एक दूसरे को अफेक्ट करता है. यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ पे हो सकता है ये एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, क्योंकि डिपेंड करता है कि मान लो 8 बिट यहाँ पे लोड की मैंने, और 5 बिट मैंने मान लो इधर लोड कर दी, उसकी सारी MSB में चली गई, तो ये हो सकता है इसको अफेक्ट ना करें. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए ऑटो रिलोड. सो मोड 2 इज कॉल्ड एज ए 8 बिट ऑटो रिलोड. वहां पर उन्होंने क्या किया, जैसे अपन टाइमर 0 की बात करें, तो टाइमर 0 है अगर मेरे पास में, तो इन्होंने यहाँ कैस्केडिंग नहीं रखी, उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो है तो उसी के ही. तो यहाँ उन्होंने कहा कि ये मेरा टाइमर का लोअर ऑर्डर बाइट है और ये मेरा टाइमर का हायर ऑर्डर बाइट है.
उन्होंने कहा कि वैल्यू जो है हम रखेंगे TH0 में, तो TH0 में मान लो उसने रखा 00, है ना, तो इसमें यहाँ मान लो ये 00 रखा क्योंकि 8 बिट का है, ये हेक्साडेसिमल में धीरे धीरे 1 से बढ़ना स्टार्ट किया, और ऐसे करके मान लो ये पूरा FF तक चला गया, FF तक चला गया। अब FF के जाने के बाद में ये क्या करता है, ये अपना काउंट वैल्यू इसको दे देता है, तो ये हो जाएगा 00 और ये रन करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑटो रिलोड मोड। मतलब जब इसका फाइनल काउंट पहुंचा तब ये भी जो है वो TL0 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पहले TH0 चलेगा और TL0 फिर कब स्टार्ट होगा, जब इसका फाइनल काउंट चलेगा। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज 8 बिट ऑटो रिलोड। तो जब हम इसको और डिस्कस करेंगे मतलब एज ए इन डेप्थ, तब मैं आपको इसका बताऊंगा। तो असल में ये इसको ऑटो रिलोड करता है लाइक दिस। ओके, स्प्लिट टाइमर का मतलब होता है जैसे अगर मैं मान के चलूं कि जैसे मान लो मेरा मोड 3 है, तो मोड 3 मैंने कहा कि स्प्लिट टाइमर है। तो स्प्लिट टाइमर का मतलब ये हुआ कि इफ आई आर टॉकिंग अबाउट द टाइमर 0, दिस इज माय टाइमर 0। तो टाइमर 0 अगर मेरा है तो मैं कहूंगा कि इसके जो TL0 है और मैं TH0 दोनों को सेपरेटली यूज कर रहा हूँ। मैं कैस्केडिंग भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही इन दोनों में कोई कनेक्शन शो कर रहा हूँ। तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्प्लिट टाइमर। ओके, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट talk on here. This is called another type of SFR. Okay, so another SFR is called as a TCON. So TCON plays very important role to control the timer section. So again, the TCON will be divided into the two different sections, but the thing will be somewhat different. Okay, so this is called IT0. IT0. Okay, another one is called as a IE0. Another one, so this is called the timer 0. Another one is called as a IT1, IE1. Okay, another bit is called as TR0, TF0, and another bit is called TR1 and TF1, TF1. अब ये देखते हैं IT0. What do you mean by the IT? This IT actually is related with the not the information technology. This is called the interrupt. This is called the interrupt. So this is sometime the timer will run. मैंने आपको बताया था हमारे पास टाइमर को कंट्रोल करने के दो अलग अलग मेथड है ना। Either you can start it or stop it by using the software techniques, or you can do with the help of the some hardware techniques. Okay, so whenever we can say कि if some external device is interface with the microcontroller, and if this external device, obviously how this external device will communicate with the microcontroller or microprocessor, it will send the some interrupts. Okay, by receiving this interrupt, if this interrupt is corresponding to the timer or counter activities, so if it is receiving some timer and counter activities from any external device, this is called the interrupt. So if this IT0 will be pertaining for interrupt for 0. Okay, but there is a one key point into this one is that before getting the interrupt into any type of the microprocessor or microcontroller, there is a one internal flip-flop is available. Okay, so internal flip-flop, the name of this internal flip-flop is called IE. So this is called IE, is called interrupt enable. मतलब क्या, मान लो आप किसी से मिलने गए है ना, मान लो कॉलेज में डायरेक्टर से ही मिलने गए आप, डायरेक्टर इज समवॉट बिजी अथॉरिटी, so before going to this one you should contact to the PA of the director, and this PA will check कि ये अब आप यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है डायरेक्टर साहब की नॉर्मल एक्टिविटी को आप डिस्टर्ब करें, तो ये PA जाके पहले इनसे कहेगा कि सर कोई मिलने आया है, अगर ये चाहेंगे तो आपसे मिलेंगे। तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड कॉन्टेक्ट टू द PA।
ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, अगर आप पीए से जाके नहीं मिले और आपने सोचा कि मैं मेरी मुलाकात हो जाएगी डायरेक्टर साहब से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस पीए इज इक्विवेलेंट टू द इंटरप्ट इनेबल। सो पहले आपको इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इनको, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिग्नल दे रहे हो, है ना, कोई सिग्नल दे रहे हो, जैसे मान लो ये सिग्नल आपका इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग है, ये आपका इंटरप्ट है और ये फ्लिप फ्लॉप है ना, और ये इसका इनेबल है। जब तक इस इनेबल पे आप ये पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा। एम आई राइट? यस और नो? ओके, है ना। ऐसा ही है कुछ सिनेरियो कि जब तक मैं इनेबल को नहीं करूंगा, तो हर एक जो अभी अपन ने इंटरप्ट डिस्कस नहीं किए इसलिए वो ऐसा हो रहा है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि सबसे पहले कोई भी इंटरप्ट एक्टिविटीज आपको करवानी है, आपको हर के लिए इंटरप्ट एक फ्लिप फ्लॉप दिया होगा, इस इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप को आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो दिस IE0, so this 0 is corresponding to that timer. Okay, so this is called, I am saying this is called the interrupt enable for my timer 0. This is called the interrupt for timer 0. Similarly, this IT1 stands for interrupt for timer 1. IT1 is called interrupt for interrupt enable for timer 1. Okay, now come to the point. This TR0 bit and TR1 bit plays very important role. So this TR0, if this TR bit, this is called TR. So if this TR bit is 1, what will happen? Your timer will run. Okay, if this TR bit is set as 0, then the timer will stop. फिर आ जाते हैं अपन बाइक वाली एनालॉजी के ऊपर कि टीआर क्या कर रहा है, टीआर किसके इक्विवेलेंट है? कोई बताएगा माइक को अनम्यूट करके कि टीआर किसके इक्विवेलेंट है? आपकी की, आप जो एक्टिवा और आपकी जो जुपिटर है या हीरो होंडा है, उसमें जब की लगाते हैं तो आपका इग्निशन ऑन हो जाता है। की को आप ऑफ करते हैं या मतलब जब रिवर्स डायरेक्शन में घुमाते हैं तो आपका इग्निशन ऑफ हो जाता है। सो ये एक तरह का इग्निशन का लेवल है। Now another one is called, this is called the timer overflow. So this bit is called as a timer overflow bit. Okay, so if I am saying this is for TF0, तो TF0 किसके टाइमर के करस्पॉन्डिंग है? TF0 है, तो कौन सा वाला ओवरफ्लो हो रहा है? ओवरफ्लो का मतलब क्या, कोई बताएगा? अगर मेरा जैसे मान लो कि 16 बिट है, मतलब 16 बिट काउंटर है, 16 बिट टाइमर है, अगर वैल्यू मेरी 000 से ये चली गई FFF तक चली गई, तो ऑब्वियसली जैसे ही FFF आया, मेरा TF0 जो है, एक मिनट, मेरा TF0 जो है वो ऑटोमेटिकली 1 सेट हो जाएगा। इसको यूजर को सेट नहीं करना पड़ता है, ये सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि आपका फाइनल काउंट आ गया है, और फाइनल काउंट आने के बाद अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपका TR0 को आपको 0 करना है कि नहीं करना है ना। जैसे मान लो अगर आपने, मैं एक एग्जांपल अभी दूंगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ये टाइमर 0 के लिए है, मतलब ये जो है टाइमर 0 को स्टार्ट या स्टॉप करेगा, तो इसका नाम है TR1। और सिमिलरली जो उसका ओवरफ्लो है टाइमर 1 का, वो टाइमर 1 का जो ओवरफ्लो है वो इंडिकेट करेगा आपको TF1। ओके, मैं यहाँ पे ये कर रहा था कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने जैसे दिया कि मान लो मैं 0000 हूँ, है ना, ये मेरा 16 बिट काउंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि यहाँ पर मेरा TR1 या मैं TR0 जो है अभी 1 है। कोई बताएगा इससे क्या होगा आगे? माइक को अनम्यूट ही कर दो, मतलब क्या है कि और थोड़ा डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। क्या होगा सर? टाइमर रन करेगा, TR1 है ना, 0 टाइम। बिल्कुल सही है। और आगे इसके अलावा बीए ग्रुप बच्चा कुछ बोलो, गलत बोलो पर बोलो। TR0 को मैंने अभी 1 किया तो क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लो ये रन किया मैंने, तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा 001 0010, इस तरह से चलते चलते ये फाइनल वैल्यू पे आ जाएगा 1111, है ना। तो जैसे मान लो अभी तो ये मैंने उसमें लिख दिया, ये 8 बिट का हो गया, सॉरी। तो ये अपन मान के चलें कि इसको ये 000 से चालू हुआ है हेक्साडेसिमल में, और ये चलते चलते FF पे आ गया है।
तो जैसे ही FF पे आया, इमीडिएटली मेरी जो TF0 है, वो 1 हो जाएगी सर। TF0 वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। आपको 1 नहीं करना है, आप किसको कर सकते हैं, आप इसको 1 कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो। तो ये शो करेगा कि TF जो है वो 1 हो गई। लेकिन अभी भी आपने TR0 को 1 किया हुआ है, तो ये जो है वो कंटिन्यूसली रन करता जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि स्टिल TR0 is equal to 1, still it will run. So or not it will run with the this one. So the next count value will be what? So the next count value will be, ये रन होगा और ये कहाँ तक चला जाएगा, फिर ये 0000, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको देखा इसने कि अब जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब ये जो है वो TF0 1 से 0 हो जाएगा। एक मिनट ना, just a minute। तो कहाँ पे थे हम लोग, हम देख रहे थे टाइमर का ऑपरेशन। ओके, तो कोई ये भी पूछ सकता है कि सर अब कैसे करें इसको रन, मतलब क्या कैसे क्या करेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी के मन में ऐसा? तो अगर ये वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली मेरा जो टाइमर F0 है वो जो है मेरा ये हो जाएगा मेरा 0। कोई डाउट इसमें किसी को? अभी तक कोई डाउट? अब यहाँ पे कोई ये पूछ सकता है कि सर ये जो आप बता रहे हो TR0, ये मैं कैसे सेट करूँ और कैसे रिसेट करूँ? आपको याद है, आपको मैडम ने बताया होगा, कोई बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ कैसे करेंगे। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक बीट है, वो TR0 भी हो सकती है या TR1 भी हो सकती है। ये क्या करती है, क्या करती है बीट? ये करती है कि या तो आप टाइमर को सेट कर लो, मतलब रन कर लो, या इसको स्टॉप कर लो। तो ऑब्वियसली ये एक बीट है। सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बीट है ना। तो TR0 एक बीट है, TR1 है। माइक्रो कंट्रोलर के पास में बीट को सेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है सेट बीट, है ना। इसका मतलब होता है सेट द बीट। और अगर मेरे को TR0 को अगर सेट करना है तो मैं जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा वो होगा सेट बी TR0। ओके, इस तरह से अगर मैं इसको करना है तो मैं कहूंगा सेट बी TR1। इससे क्या होगा, ये जो TR0 है, this TR0 will be change its status. If previously it was 0, then it will immediately here it will become the 1. Okay, and similarly the next one is converted as a TR1 as a 1. Okay, so means this one is corresponding to set. Okay, if it is set, then I will say my timer 0 will be start. Okay, and similarly next we can define. Okay, if suppose if you want to stop the timer, now what is the facility that we can do for the stop the timer? So for the stopping the timer, you can just issue the instruction just like stop the timer with the help of the TR0. So we will say that there is one instruction for that one, and this instruction is corresponding to CLR, means the clear TR0. This is called the CLR for TR1. Okay, so this will set, if I'm saying about that, then immediately my timer will be stopped, because what will happen if I check the value of this TR0, so TR0 will be 0, and here will say the TR1, this is corresponding to 0. Okay, so in this way I can say my timer will be stopped on here. Okay, so now this is called the one of the way that you can control the timer in a software way. So this is the called as a software way to stop and start the timer, है ना। मतलब अभी अपन ने एक ही बीट का कहा है, मैंने यहाँ पर आपको देखो
जो भी इंस्ट्रक्शन बताया वो TR0 के लिए बताया, आप गलती से भी इसको TF0 TF1 मत कर लेना, नहीं तो वो आपकी गलती है ना। नहीं आप मतलब आप ऐसा इमेजिन करके सर वो ऑटोमेटिकली जो आपका काउंटर है अगर वो उस वैल्यू को रीच कर गया तो फाइनली जो है वो आपका ये है। अब कोई कहेगा कि सर आपने यहाँ पे बताया था कि सर काउंटर की वैल्यू लोड करना है, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक काउंट है वो आपको लोड करना है, जैसे लिखा, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल I have a value of count. This count value is corresponding to AAC0H, है ना, और इसको मेरे को लोड करना है टाइमर 0 में। ये मेरी टाइमर 0 है। क्या करूं मैं, कैसे करूं? तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? This portion will be loaded into the TL0 and this portion will be loaded into the TH0। अब कैसे करें, अब इसको लोड कैसे करें? तो लोड करने के लिए आपके पास में इंस्ट्रक्शन होते हैं। सो द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मूव TL0, hash C0H। Similarly, for this one you can load this TH0 with the help of this instruction AAH। अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं कि मैं हैश क्यों लगाया यहाँ पर, हैश क्यों लगाया डायरेक्ट डाटा के लिए वैल्यू, हाँ वैल्यू है सब, वैल्यू है इसलिए अपन ने हैश लगाया। सो इन दिस वे यू कैन लोड द काउंट। सो दिस इज द वे ऑफ लोडिंग द काउंट, सॉफ्टवेयर वे टू लोड द काउंट। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें किसी को? एनी डाउट इनटू दिस? ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने जो आर्किटेक्चर देखा माइक्रो कंट्रोलर का, तो माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर में आप कहेंगे कि सर आप टाइमर की बात कर रहे हैं, मेरे को आउटपुट कहाँ से मिलेगा टाइमर का? तो टाइमर के आउटपुट के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में एक टाइमर है, तो टाइमर के लिए मेरे पास दो अलग अलग पिन उन्होंने डिफाइन की हुई है और उस पिन को उसने कहा है T0 एंड T1। सो दिस T0 एंड T1 है ना। तो ये मेरा, अगर मैंने मान के चलना कि दिस इज माय 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो दिस इज माय T0 एंड T1। सो एक्चुअली है कहाँ पर? मैंने पूरा आर्किटेक्चर देखा तो मेरे पास में क्या मिला कि मेरे पास में सिर्फ 4 तो पोर्ट रहते हैं और कुछ VCC और ग्राउंड की पिन है, बाकी सब एड्रेस बस डाटा बस भी पोर्ट पे बना दी। तो ये है कहाँ? तो दिस पोर्शन इज अवेलेबल इनसाइड टू port and this is called the P। If I am writing here, this T0 is aligned with the port 3.4. So this is the meaning of this one. This is available on the port 3 on the pin number 4. So this T1 is corresponding to T 3.5. So if I'm not saying T0 and T1, if I'm saying I want to set or reset this T 3.4 or T 3.5, so at that time the meaning should be clear that you are talking about the T0 and T1. Okay, so this is called as a pin number 14 of the microcontroller, and this is called the pin number 15. So here I am stopping because I have to go to the college. I'm stopping here. Tomorrow we will talk in the again a few more things about the timer. Okay, if there is a question you can ask now.